Jammu Kashmir Employees Coordination Committee, Jammu Kashmir Employed. Today, I am with me Dr. Fayaz Ahmad Wani, Chief Spokesperson, Jammu Kashmir Employees Coordination Committee. I am having with me Jammu Kashmir College Contractual Teachers Association General Secretary Zahid Ahmad and Sajid Ali, sorry. And we are having with us, he is not here and he will come. We are having Dr. Iqbal, he is President Publicity Secretary, Jammu Kashmir Employees Coordination Committee. Regarding this press conference, today's press conference, Jammu Kashmir Employees Coordination Committee is raising always the issues which are genuine and legal in front of the authorities via this media fraternity. Regarding today's issue and today's press conference, particularly the agenda of today's press conference is, and I will tell you in crux what is the agenda of today's press conference. First of all, I will tell you that there are hundreds of college contractual teachers, or we can say college contractual lecturers, which are working in different colleges of the Jammu and Kashmir, who are working since last 20 years in different colleges of the Jammu and Kashmir. जिस तरह से दूसरी रियासतों में एक पॉलिसी है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी, हिमाचल प्रदेश या दीगर रियासतों में उन्होंने बहुत सारी जगह पे कंट्री में जो पॉलिसी चल रही है उनको एब्जॉर्ब किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉलिसी नहीं हुई है अभी तक. आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक पीएचडी स्कॉलर को, एक एमफिल स्कॉलर को जो कॉलेज में पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, उसको खाली 28,000 रुपये दी जाती है. यही जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, तो जब ये बाइफर्केशन हो गई, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इस वक्त इसी कॉलेज लेक्चरर को 60,000 के करीब सैलरी दी जाती है. 60,000 के करीब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में एक कॉलेज लेक्चरर को सैलरी दी जाती है. लेकिन इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी देयर इज अनदर प्रोविजन, यहाँ पे 28,000 दी जाती है. इसलिए ये सरासर नाइंसाफी है. हमारी सरकार से पहली अपील यही है, इनके लिए भी अगर यूनियन टेरिटरीज दोनों सेम है तो ये नाइंसाफी क्यों? वहाँ पे 60,000 के करीब दी जाती है और यहाँ पे 28,000 के करीब दी जाती है. ये सरासर नाइंसाफी है. और पिछले 20 साल 15 सालों से ये डिफरेंट कॉलेजेस में काम करते आ रहे हैं और ये इनका जेन्युइन इशू है. दूसरी बात, इनके लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, जैसा कि अदर स्टेट्स, अदर यूनियन टेरिटरीज में हुआ है, और टाइम टू टाइम इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो उम्र है इनकी, उसका हाफ ऑफ द पीरियड इन्होंने डिपार्टमेंट में सर्व किया है. तो ये एक जेन्युइन इशू है. ये हमारी पहली प्रायोरिटी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज. दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इसमें बहुत सारी यूनिट्स एफिलिएट है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पब्लिसिटी प्लानिंग है, एग्रोस्टोलॉजी है. उन बिचारों में उसमें जो लोग बेचारे काम करते हैं, जो कैजुअल लेबरर्स काम करते हैं, पिछले 3-3, 4-4 साल से उनके वेज रिलीज नहीं हुए, प्रोवाइडेड कि उनकी फाइल जो है कंसर्नड जो हायर ऑफिसर है उनके पीसीसीएफ उसके पास पहुंची है, लेकिन अभी कोई उसमें पेशरफ्त नहीं आई. हम चाहते हैं कि जो आने वाला बजट है, बजट डिस्कशन उसमें उनको जल्द से जल्द लाया जाए. साथ साथ सिंध फॉरेस्ट डिवीजन एक क्रिटिकल इशू है, उसमें हम चाहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ हो जाए, उनके साथ इंसाफ हो जाए, सॉरी. तो इसके लिए मेरे पास कुछ एविडेंसेस हैं. सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है. हुआ क्या है, 2014-13 में वहां पे जो आप लोगों ने अपॉइंट किए हैं कैजुअल लेबरर्स, उसके बाद जो उनकी ज्यादा तादाद थी, आपने इनक्वायरी कराई. इनक्वायरी कराने के बाद आपने उन लोगों को कैटेगराइज किया 4 कैटेगरीज में. उसमें से 2 को आपने बताया, ए और बी को, कि इनकी वेजेस रिलीज की जाए और सी की रे-एग्जामिनेशन करके रिकमेंडेशन भेज दी जाए. एज पर डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस अभी तक 2-3 बार उनकी रिकमेंडेशन गई है, लेकिन पीसीसीएफ फॉरेस्ट के पास फिर से उधर से जो है आगे फ्रॉम द पीसीसीएफ ऑफिस ये आगे नहीं फॉरवर्ड की जाती है. और इसमें एक प्रोब होना चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए, किस बुनियाद पे कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है. प्रोवाइडेड कि एसआरओ 520 बोलता है कि जिसकी भी एमआर बिफोर कट ऑफ डेट 17/3/2015 है, उसको जो है वेजेस रिलीज की जाए और उसको जो है 520 एसआरओ में लाया जाए. इनकी भी एमआर 17/3/2015 से पहले निकलती है एज पर डॉक्यूमेंट्स. और ये जो कम्युनिकेशन बार बार गई है फ्रॉम ग्राउंड हायर ऑफिशियल, उसको इस बुनियाद पे भी हम ये कहते हैं इनके साथ इंसाफ होना चाहिए. अगर डिपार्टमेंट इनके साथ इंसाफ नहीं करेगा तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि फैक्ट्स पता चले कि कहां पे गलत हुआ है. और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ یونٹس ہیں, جیسے ہمارا نریگا سٹاف ہے, وہ پچھلے دنوں سٹرائک پر بھی تھے, لیکن ان کے رینیومریشن میں جو انکریز کہا گیا تھا, جس لحاظ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, وہ نہیں ہوا, اور ان کے لیے بھی پالیسی نہیں بنائی گئی. ساتھ ساتھ این وائی سیز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں, مختلف محکموں میں کام کرتے ہیں, نیشنل یوتھ کارپس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, اور اس کووڈ-19 میں انہوں نے کام کیا ہے. 8,000 کے قریب ان کی تعداد ہے, اور 2008 میں ان کو ایک جاب پالیسی کے تحت یہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. اس لیے سرکار کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی, 2,500 روپے میں وہ کام کرتے ہیں, اونلی 2,500 روپیز, 2,500 روپے میں وہ منتھلی کام کرتے ہیں. آج کے حالات میں وہ 2,500 روپے پہ گزارا کیسے کریں گے؟ ان کے لیے جو ہے انہانسمنٹ ہونی چاہیے سیلریز میں. ساتھ ساتھ انہی کی جیسی ایک کیٹیگری ہے رہبری کھیل, وہ 3,000 پہ کام کرتے ہیں. آج کے دور پہ 3,000 2,500 روپے میں کام کر رہا, مجھے لگ رہا ہے یہ سراسر ناانصافی ہے. سرکار کو چاہیے جس طرح سے پچھلے دنوں ورتھی پرنسپل سیکرٹری اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ اسکول ایجوکیشن اصغر حسن سامو نے ڈبل کی تھی, جو ہائر وہ فیکلٹی کرتے ہیں ان کی ڈبل کی تھی سیلری, ان کی بھی کم از کم 10 سے 15,000 تک کی جائے, تاکہ جو ہے ان کو انصاف ملے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہیں NHM میں کام کرنے والے لوگ ہیں, یا NHM سے جو بھی کنٹریکچوئل سٹاف ہے, ان کے لیے جو ہے ایک پالیسی واضح ہونی چاہیے. جیسے ادر رائٹ ناؤ وی آر ان یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر, جو رولز ادر یونین ٹیریٹریز میں ہیں وہ رولز اگر یہاں فالو کی جائے تو ان کو انصاف ملے گا. ادروائز اگر ہم یونین ٹیریٹری میں رہنے کے باوجود بھی ان رولز سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو مجھے نہیں لگتا یہ انصاف ہے. آپ کو میں نے مثال دی, لداخ میں ایک قانون ہے, وہاں پہ 60,000 کے قریب سیلری دی جاتی ہے کالج لیکچرر کو, اور یہاں پہ 28,000 دی جاتی ہے. پریس کانفرنس تھا. فرسٹ آف آل وی وانٹ دیئر شوڈ بی انہانسمنٹ آف سیلریز آف the college contractual teachers and a regularization job policy. Secondly, we demand there should be a thorough probe in Sindh Forest Division regarding the wages disbursement, and the genuine ones should get the wages. Number third, NYC's Rehbari Khel and other contractual staff like MG Narega, which are working in different departments, they should be given a right for they should be introduced in regularization policy, and they should get the minimum wages or minimum salaries at early as possible. Thank you.